Okay. So problem solving करना है ना हमें? We have to go for problem solving. Share the screen. Okay. Question number 1 completed. Question number 1 done. Yes, sir. Okay. Question number 2. जो डाउट होगा मुझे बोलिए, I'll solve that. Question number 2. Shall I leave it? Is it clear? Question number 2. Yes, sir. Okay. Question number 3. Question 3. Respond fast है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं. Question 3 done. Yes, sir. Done. Okay. Question number 4. Sir, इसमें doubt था. 4 में doubt है. Okay. So 4 what they are saying is a car moves a distance of 200 meters. It covers first half of the distance with 40 km per hour and the second half distance with V. The average speed is 48 km. The value of V is. So question says that कि एक कार है, सबने सॉल्व किया है ना? सबने सॉल्व किया है? This is B, this is C. So first ट्रैवल कर रहा है वो 60 किलोमीटर पर आवर से. नेक्स्ट ट्रैवल कर रहा है वो 20 किलोमीटर पर आवर से. ओके, सॉरी फर्स्ट 40 से चल रहा है, नेक्स्ट 20 से चल रहा है. सो ये ट्रैवल किया उसने 40 किलोमीटर पर आवर से और 20 किलोमीटर पर आवर से. और आपको क्या दिया है कि एवरेज स्पीड जो दिया है दिस इज 48 किलोमीटर पर आवर. सबसे क्या पूछ रहा है? फाइंड वैल्यू ऑफ v. सो v का वैल्यू फाइंड आउट करना. हाफ ऑफ द डिस्टेंस है. कैसे करेंगे इस पे अप्रोच? हाँ, लेट्स से कि ये x है तो ये भी x होगा ऑफ कोर्स. सो व्हाट इज टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है? 2x. सो टोटल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट? 2x. अगर हम ए बी इंटरवल में जाए, ये वाले इंटरवल में, सो व्हाट वी कैन गो विद स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. t1 पकड़ लो तो t1 कितना हो जाएगा? x डिवाइडेड बाय 40. लाइकवाइज अगर हम bc में जाएंगे यहाँ से t2 कितना हो जाएगा? x डिवाइडेड बाय v. सो टोटल टाइम कितना होगा? लेट मी सेट इट, दिस इज as कैपिटल T is t1 प्लस ऑफ t2. सो टोटल टाइम कितना हो गया? x by 40 plus x by v. So if I take x common, 40 plus v by 40 into, ये आपका टोटल टाइम हो गया. नाउ एवरेज स्पीड क्या होगा? इज इट इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम. एवरेज स्पीड x से x एलिमिनेट हो जाएगा और एवरेज स्पीड हमें दिया 48. 40 into 2 into v by 40 plus of v. सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा इसको? 24 6 3 5. So 3 into 40 plus of v is equal to what? 5v. 120 plus 3v is equal to what? 5v. 2v कितना आ गया? 120 60. So which means v will be equal to what? 60 kilometer
This is the final answer. Am I clear? Yes, sir. Okay. Yes. Let's move forward. आगे बढ़ते हैं. Fine. So done with question number 4. Question 5. Question 5. Done, sir. Question 6. Question number 6. Yes. Okay. फटाफट बोलो, टाइम पास नहीं, जल्दी जल्दी, जितना पास, बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा. क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7. Okay. Question 8. And please everyone करके आया करो हर टाइम जब भी होमवर्क दूंगा तो, अदरवाइज कुछ भी फायदा नहीं होगा इतना मेहनत करने का. अर्ली मॉर्निंग हम लोग 6 बजे लेक्चर कर रहे हैं. अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं करोगे तो कुछ भी गेन नहीं आएगा. You have to solve. Question number 8. Question number 8. Good. Question number 9. Question number 9. Done, sir. Very good. Question number 10. Yes, sir. सर सॉल्व कीजिए ना. Done, Yeah. sir. ये डाउट है? यस सर. Question number 11. Very good, Bhumika. Question number 11. Done, sir. Done. Question number 12. Done. Good. Question 13. Sir, इसमें doubt था. Okay. The displacement of particle varies with time as x is equal to a e raised to power minus alpha t plus b e raised to power minus e raised to power beta t, where a, b, alpha and beta are positive constants. The velocity of particle will be. So question में क्या कह रहा है कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिया है a e raised to power minus of alpha t plus b e raised to power beta t. पार्टिकल का यही डिस्प्लेसमेंट दिया है, अल्फा बीटा and a and b are positive constants. Then velocity of particle. So velocity निकालते हैं. So velocity के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. e raised to power minus alpha into t by dt plus b e raised to power beta into t by dt. So what will be the velocity from here? A of minus alpha e raised to power alpha into t plus b of beta e raised to power beta into, है ना? So what is the velocity I'm having? Minus a alpha e raised to power minus alpha into t plus b beta e raised to power beta into t. A है ना velocity? Okay. Now let's go with the options. Option में जाके देखते हैं क्या क्या. Independent of b, नहीं, obviously बात नहीं. b से independent नहीं है ना? b का फैक्टर तो है ही, so it is not independent of b. Second option कह रहा है drop to zero when alpha is equal to beta. अगर अल्फा और बीटा के बराबर हो जाए, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो क्या वेलोसिटी जीरो हो जाएगा? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि a और b का फैक्टर रहेगा. दिस विल बी सेम बट देयर इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b, सो व्हिच कैन नॉट मेक इट टू जीरो. सो ऑप्शन नंबर बी भी बराबर नहीं है. गोज ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, गोज ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम. टाइम के साथ क्या होगा? विल इट इंक्रीज कि विल इट डिक्रीज? देखो, अगर आप ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ अगर आप देखोगे, थोड़ा सा इस पे खेलते हैं. ऐसा कुछ ग्राफ होता है. लेट्स से दिस इज माय एक्स एक्सिस. ग्राफ मार्क करते चलोगे सब लोग अच्छे से, y and y dash. So this is the graph of y is equal to e raised to power x. ये ग्राफ होता है y raised to e raised to power x का. जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा e raised to power x will keep on increasing. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा e raised to power beta t will increase, है ना?
और अगर आप e raised to power minus x का ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे, so graph will be something like this. So this is my x axis, x dash, y axis, y dash. ये ग्राफ होता है मेरा y raised to power y is equal to e raised to power minus x का. So this is the graph of y is equal to e raised to power minus x. अब देखो जैसे टाइम बढ़ेगा, ठीक है, e raised to power बीटा t will also increase. बढ़ रहा है ना, Yes. right? So as time is increasing, so e raised to power बीटा t भी जो corresponding है ये भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन e raised to power माइनस ऑफ अल्फा टी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? देखो जैसे जैसे टाइम, हालांकि नेगेटिव में तो जाएंगे नहीं, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है e raised to power माइनस अल्फा टी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, तो ये वाला टर्म पॉजिटिव टर्म बढ़ रहा है, ये वाला टर्म घट रहा है, तो नेट वेलोसिटी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? ये इंक्रीज करेगा, ये पॉजिटिव वाला फैक्टर है विच इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, ये नेगेटिव फैक्टर इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, तो एंड रिजल्ट जो आपको मिलेगा दैट विल ऑब्वियसली इंक्रीज. सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट विथ टाइम velocity will increase. Am I clear? टाइम के साथ में क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगा. और क्यों वेलोसिटी इंक्रीज करेगा समझ में आया सबको? Yes, sir. गुड. क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा e raised to power बीटा टी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा e raised to power अल्फा टी विल डिक्रीज, तो उसका सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो रिजल्ट बढ़ेगा ही नहीं. डन. ग्राफ क्लियर होना चाहिए. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 डन. क्वेश्चन 14. Done, sir. वेरी गुड, एक्सीलेंट. क्वेश्चन नंबर 15. Done, sir. क्या लॉजिक लगाया इसमें? 15 में क्या लॉजिक लगाया? Sir, in option Sir, B, 1D motion is there, and in 1D motion, body can have only one value of velocity at a time, but not two values of velocity. Excellent. Excellent. Very good. Question number 16. Question number 16. Sir, I have doubt. Okay. Yes, I'll solve it, Bhumika. So question number 16 में what they are saying is a particle of unit mass undergoes one dimensional motion. So particle का पहले तो mass दिया है, mass कितना दिया है? 1 unit. Okay, fine. Such that the velocity varies according to the relation v as a function of x. As so velocity दिया है beta x raised to power minus 2n. Beta x raised to power minus of 2n, where beta and n are constant and x is the position of particle. The acceleration of particle as a function of x is. आपसे पूछा जा रहा है find acceleration of particle as a function of x. चलो डिफरेंशिएट करें इसको. x raised to power, ठीक है. So velocity as a function of x कितना हो गया? बीटा x raised to power minus 2n. इसको जरा डिफरेंशिएट करते हैं. dv by dt होता है एक्सेलरेशन. So बीटा dx raised to power minus of 2n by dt. So acceleration कितना हो जाएगा? बीटा dx raised to power minus of 2n into dx by dt. ऐसे ही करते हैं ना डिफरेंशिएट चेन रूल के थ्रू. So acceleration कितना हो जाएगा? minus 2n into बीटा x raised to power 2n minus of 1 here it will be minus of 2n minus of 1. सिंपल डिफरेंशिएशन का रूल लगाया और dx by dt क्या देगा बेटा आपको? वेलोसिटी.
Am I clear? Clear a point? So what will be acceleration from here? Minus of 2n into beta x raised to power minus 2n minus 1. और velocity क्या है? क्योंकि मुझे x का ही function चाहिए. So velocity क्या है? Beta x raised to power of minus of 2n. So what will be acceleration? Minus of 2n into beta square x raised to power minus of 4n minus 2. This will be the acceleration as a function of displacement. Am I clear properly? Yes, sir. सिंपल तो था ये, तो कुछ नहीं था, सिर्फ अच्छे से आपको डिराइव कर ले, डिफरेंशिएट कर लेना था, नथिंग एल्स. गुड, वेरी गुड भूमिका. क्लियर हो गया बेटा? आपको सबको क्लियर है पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 16. Yes. Yes. Good. 16 done then. Question number 17. Done, sir. Done. Very good. Question number 18. Sir, doubt is. Right, no doubt. A particle moves distance x in time as a function of equation x is equal to t plus 5 raised to power minus 1. The acceleration of particle is proportional to. इस क्वेश्चन में a particle moves x is equal to t plus 5 raised to. ठीक है, सो हम वेलोसिटी निकालते हैं. मुझे एक्सेलरेशन पर जाना है. d of t plus 5 raised to power minus 1 by dt. So what will be velocity from here? Minus 1 ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे ना चेन रूल लगा के. सो वेलोसिटी कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 1 बाय टी प्लस 5 का होल स्क्वायर एंड दिस विल बी फ्रॉम हियर 1 प्लस ऑफ 0. सो व्हाट विल बी वेलोसिटी? वेलोसिटी कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ टी प्लस ऑफ 5 का स्क्वायर, ये रेज़ टू पावर माइनस 2, यही होगा ना वेलोसिटी. This part will go up to 10 raised to power minus 2 आ जाएगा ना. Now acceleration के लिए आप क्या करोगे? वापस इसको डिफरेंशिएट कर dv by dt. So here it will be minus of d t plus 5 raised to power minus 2 t plus of 5 into dt plus of 5 by what? ठीक है. So acceleration क्या मिलेगा आपको? Minus minus plus, so plus of 2 t plus 5 raised to power minus 3, and this will be again 1 plus of 0. So what is acceleration? 2 t plus 5 raised to power minus 3, and t plus 5 raised to power minus 1 is my displacement. So can I say that acceleration is equal to कितना हो जाएगा? What is the value of acceleration here? क्या ये x है आपका? x का क्यूब हो गया ना बेटा. यहाँ से क्या मुझे मिला? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब, यानी डिस्प्लेसमेंट का क्यूब. क्या है ऐसा ऑप्शन? द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डिस्टेंस के स्क्वायर, डिस्टेंस का रेज़ टू पावर माइनस 2, मतलब ये नहीं है. चल गो पर वेलोसिटी. वेलोसिटी के लिए जाना पड़ेगा. वेलोसिटी के लिए कैसे जाएंगे? क्या वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t प्लस ऑफ 5 रेज़ टू पावर माइनस 2. Yes, sir. Yes, sir. So can we say from here, स्क्वायर कर दो दोनों साइड्स, तो क्या रिजल्ट आएगा? What will be the result I am having? Can we say v square is directly proportional to t plus of 5? आएगा सर? या ऐसे देखो, if you are getting confused ना, ऐसे.
वेलोसिटी ये मेरा आया था, सो वेलोसिटी क्या था मेरे पास, माइनस ऑफ टी प्लस ऑफ 5 रेज टू पावर -2. सो व्हाट वी कैन से बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, -1 बाय टी प्लस ऑफ 5 का स्क्वायर. टी प्लस ऑफ 5 का स्क्वायर, 1 सेकेंड, into velocity is equal to -1. Is it okay? Yes, sir. So यहाँ से एक रिलेशन आप इधर से बैठा लो और एक रिलेशन इधर से बैठा लो, गेट इट. तो छोड़ो, मैं डायरेक्टली ऐसे ही कर देता. और क्या मुझे मिल रहा है, एक्सेलरेशन क्या है, 2 ऑफ टी प्लस 5 रेज टू पावर कितना हो गया, -3. टी प्लस 5 रेज टू पावर कितना हो गया, -3. जस्ट ट्राई टू गेट द रिलेशन बिटवीन देम. करिए रिलेशन फटाफट. आपके पास दोनों इक्वेशंस मैंने डिराइव किया है. वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी मेरे पास है, और डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी मेरे पास. ओके, आया आंसर. Sir, acceleration is directly proportional to v raised to 3 by 2 r. यस, वेरी गुड. ऐसे आएगा डायरेक्टली. तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v रेज़ टू पावर 3/2. डायरेक्टली यू हैव द रिलेशंस फ्रॉम हियर. इन दोनों को जस्ट इक्वेट कर लो टू गेट इट, दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v रेज़ टू पावर 3/2. But it can also be written as v root v. या ऑफ कोर्स, बट उसमें जाना नहीं है, हमें डायरेक्ट इसमें रखना है. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. So you're done. Question number 19. 19. Question number 19. हो गया कि करूं? Sir, yes, sir, doubt is. Doubt. Okay. A particle moving along x-axis has an acceleration f at time t, where f is equal to f naught 1 minus of t by t. F naught and capital T are constants. The particle at t is equal to 0 at 0 velocity. So first, let me write down the question. इस पर्टिकुलर केस में आपको एक्सेलरेशन दिया है f is equal to what, f naught 1 minus of small t by capital T. ये मेरा एक्सेलरेशन दिया है. F naught and capital T are constants. So F naught और capital T are constants. ये दोनों constant दिया हुआ है. At t is equal to 0, particle has 0 velocity. So at velocity आपका क्या है, 0. In the time interval between t is equal to 0 and the instant when f is equal to 0, the particle velocity fx is okay. चलो, तो आपसे टाइम पूछा गया है. In the time interval t is equal to 0 and the instant when f is equal to पार्टिकल का वेलोसिटी पूछ रहा है.
मुझे बता एक्सेलरेशन 0 कभी होगा? f is equal to f naught 1 minus of small t by capital T. आपको यही पूछ रहा है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी व्हेन f is equal to 0. f 0 कभी होगा? So can we say ये वाला टर्म जब मेरा 1 minus small t by capital T is equal to 0, so t by capital T is equal to 1, so t किसके बराबर हो जाएगा? Capital T, which means कि at t is equal to capital T, my acceleration will be 0. आया ना? At t is equal to capital T, f will be 0. करेक्ट, आपको वेलोसिटी पूछा है. So f is equal to f naught 1 minus of small t by capital T. Acceleration को what we can write? dv by dt 1 minus of small t by capital T. इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड. dv is equal to what? f naught बाहर निकाला 1 into dt minus of ये कितना हो जाएगा? t by t into what? dt. ऐसे ही करना पड़ेगा ना हमें. बोलो लिमिट्स. जब टाइम आपका 0 था तो क्या करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी भी 0 था? और टाइम जब आपका कैपिटल टी है तो वेलोसिटी v क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, राइट? सो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v फ्रॉम 0 टू v f नॉट. ये dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना? t फ्रॉम 0 टू कैपिटल T. ये कैपिटल T कांस्टेंट था, बाहर निकाल दो. इंटीग्रेशन ऑफ t into dt फ्रॉम 0 टू कैपिटल. So what I am having, v is equal to f naught into t minus of 1 by t into t square by 2 from 0 to capital. Limit place कर देंगे from here. So v is equal to f naught bracket t minus of t square by twice of. एक t से t एलिमिनेट हो गया. So v कितना हो जाएगा? f naught into t by. Is it clear? Yes, sir. Good. समझ गया बेटा सबको पॉइंट? ये समझा सभी को कैलकुलेशन इसका? Yes, Good. sir. Good. So let's move forward. So question number 19 be done. Question number 20. Done, sir. Done, sir. So question number 20 भी हो गया. Fine. Question number 21. Done, sir. Good. Done. सबका हो गया 21. Shall I move forward? 21 सभी का हो गया. Can I move forward? Okay. Question number 22. Question number 22. Question number 22 करूं कि हो गया है? Not done. Okay. The acceleration of a particle is increasing linearly with time as bt. So acceleration particle का linearly बढ़ रहा है as bt. So question में क्या दिया है? The acceleration is increasing linearly with bt. The particle starts from origin at initial velocity of v naught. At t is equal to x is equal to 0 और v is equal to what? v. Origin से start हो रहा है तो x 0 होगा और velocity को मैंने v naught पकड़ ली. The distance traveled by particle in time t will be. आपसे पूछा जा रहा है find distance traveled by particle in time t. चलो करें. See acceleration मुझे दिया कितना बेटा? bt. What we can write acceleration? dv by dt is equal to b into t. So dv कितना हो जाएगा? b into t into dt. इंटीग्रेट करते हैं. जब टाइम आपका 0 था, पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या था? v नॉट. मान लो किसी भी रैंडम टाइम t पे पार्टिकल का वेलोसिटी v हो गया.
So at t is equal to 0, the velocity of particle which I was having is 0, v naught, क्योंकि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी v naught दिया है. किसी भी रैंडम टाइम t पे आप मान लो पार्टिकल का वेलोसिटी v हो गया. सो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v फ्रॉम 0 टू v, t square by 2 from 0 to t. So what is velocity I am having here? कितना है? v minus of v naught into bt square by 2. So v कितना हो गया बेटा? Is it equal to v naught plus bt square by 2? यही होगा ना वेलोसिटी? Yes. आपको वेलोसिटी नहीं पूछा, आपको डिस्टेंस पूछा है. सिंस ये एक ही डायरेक्शन में चल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा. So this I can write as dx by dt, v naught plus of bt square by 2. So dx कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ v naught प्लस ऑफ bt स्क्वायर बाय 2 इंटू dt. इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड. dx v naught कांस्टेंट था, dt प्लस b बाय 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर इंटू व्हाट? dt. देखो, सो जब आपका टाइम 0 था तो पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन 0 था, बिकॉज ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है. किसी भी टाइम t पे मान लो पार्टिकल x पे जो आपको निकालना है. सो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x फ्रॉम 0 टू x, v naught into t from 0 to t plus of b by 2, इसको इंटीग्रेट करो आएगा t cube by 3 from 0 to t. So x कितना हो जाएगा? v naught into t plus bt cube by 6. This will be our final answer. Am I clear? Calculation जमा. Yes. चल, let's move forward. क्लियर है सबको? इधर एक क्वेश्चन सबको क्लियर है? कैन आई मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़ सकते हैं? Yes, sir. Yes. मयूरेश नहीं यूज कर पाएंगे बेटा, कुछ प्रीवियस प्रॉब्लम है. नहीं, इस प्रॉब्लम में भी काइनेमेटिक इक्वेशन यूज नहीं कर पाएंगे मयूरेश. उसके पीछे रीजन क्या है कि आपका जो ये एक्सेलरेशन है वो वेरिएबल है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज डिपेंडिंग ऑन टाइम. इट्स अ वेरिएबल एक्सेलरेशन और काइनेमेटिक इक्वेशन कैन ओनली बी अप्लाइड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. सो मुझे नहीं कर पाएंगे हम लोग, हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा. इज इट क्लियर? है ना? आप देखो ये जो Yes, एक्सेलरेशन आपका है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इंप्लाइज की एक्सेलरेशन वेरिएबल है और काइनेमेटिक इक्वेशंस कैन बी अप्लाइड ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशंस. तो यहाँ तो हम वो यूज कर नहीं पाएंगे, विल हैव टू गो फॉर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन. ओके, नेक्स्ट. सो दिस इज डन. 22, 23. Done, sir. 23 done everyone? Yes, sir. Leaving it. Question number 24. Done. Okay, good. 25. Done. Excellent. Done, sir. Excellent. Excellent. 26. Done, sir. Good. Done, sir. 27. 27. Done, sir. Okay. सबका हो गया 27? Yes. Okay. 28. 28. Done, sir. Okay. Everyone, सबका हो गया 28? Yes. Okay. सब लोग बोलो, मुझे तभी समझेगा, है ना? सब लोग बोलो. कोई भी न्यूमेरिकल में फंसोगे मुझे बिंदास पूछो, सर ये नहीं हुआ, I'll solve it. 29. Done. Very good. Excellent. Good भूमिका. Very good. सब लोग. Question number 30. 30. Done, sir. Okay. Good. 30 सबका हो गया है या किसी को डाउट है? Done. Okay. Excellent बेटा. 31. 31.
Done. Excellent. सबका हो गया 31? Yes, sir. Okay. 32. Done, sir. Done. Very good. 33. Done, sir. Okay. Excellent. I'm leaving 33. 33 हो गया ना सभी का? Yes. Okay. 34. 34. Sir, I have doubt doubt in this. Doubt, sir. is okay. A ball is thrown vertically upward with speed u. The distance covered during the last t seconds of the ascent is. Last t seconds में. So आपने क्या किया है इसमें कि यहाँ से बॉडी को आपने फेंका है and this here projected with u meter per second. So क्या है? The distance covered during the last t seconds of the ascent is. So they are asking you to calculate what distance covered in last t seconds. So find distance covered in last t seconds of ascent. So ऊपर ही जाने में जब के देखना है लास्ट 30 सेकंड्स में कितना चलेगा वो आपसे पूछा है. ठीक है. मुझे एक बात बताइए इसको मैक्सिमम हाइट जाने में कितना वक्त लगेगा? What will be the time required to go to the maximum height? टोटल टाइम कितना लगेगा? क्या लॉजिक लगाएंगे उसके लिए? v is equal to u plus of at. जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा so of course इसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा. Initially u, acceleration of minus g into t. So gt will be equal to u. So t कितना हो जाएगा? Will that be equal to u by g? ठीक है, ये होगा ना u by g. So इसको टोटल टाइम यहाँ से यहाँ जाने में u by g लगा और ये लास्ट t सेकंड्स था. So what will be this time? Is it u by g minus of t? तो जब ये पार्टिकल यहाँ पे है इतना ट्रेवल करने के बाद तो मान लो इसका वेलोसिटी v डैश है. सो लेट्स फर्स्ट फाइंड v डैश. पहले हम v डैश निकाल लेते हैं. अगेन यूज करो v इज इक्वल टू u प्लस ऑफ at. v डैश इनिशियली u से आपने फेंका है माइनस ऑफ g और टाइम कितना लगा बेटा? u बाई g माइनस ऑफ t. हाँ या ना? देखो आपने जब फेंका था तो इस बॉल को हाईएस्ट पॉइंट पे जाने में कितना वक्त लगा? टी डैश कर देता हूँ मैं. सो कितना टाइम लगा? सो टी डैश विल बी सिंपली इक्वल टू व्हाट? u बाई g. ये आपका लास्ट टी सेकंड्स है. तो ये कितना टाइम होगा? क्या ये टोटल टाइम आपको u बाई g लगा था और ये टी सेकंड्स आप रिमूव कर दो तो ये टाइम कितना बचेगा आपके पास? इज इट u बाई g माइनस ऑफ t? Yes, sir. ओके. सो व्हाट विल बी द वेलोसिटी व्हिच यू आर हैविंग हियर? v डैश कितना हो जाएगा? Is it u minus of g into u by g plus of gt? यही होगा ना वेलोसिटी उसके पास? यही होगा ना वेलोसिटी उसके पास? So just find out the velocity first. कितना हो जाएगा वेलोसिटी? So this g and g will get cancelled. तो मेरा वेलोसिटी कितना हो गया बेटा? Is it simply equal to what? gt. आपको यहाँ का डिस्टेंस पूछा है तो सिंपली आप क्या लगा दोगे? काइनेमेटिक का इक्वेशंस s is equal to ut plus of half at square. So s इधर का वेलोसिटी आपका v dash है which is what? gt into t plus half into acceleration minus g into टाइम कितना हो गया? t square.
सो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा ये, gt स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ gt स्क्वायर. सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, सिंपली इक्वल टू half dt. यही पूछ रहा था. Am I clear properly? Yes, sir. Good. चलो let's see the screen again. So 34 का आंसर होगा हाफ gt स्क्वायर. Okay. Question number 35. Done, sir. Good. 35 सभी का हो गया. Yes, sir. Okay. Question number 36. Done, sir. Very good. 36 सबका हो गया. Yes. Okay. Good. Question number 37. Done, sir. 37 everyone सबका हुआ. Yes. Okay. So I'm leaving 37 ना. किसी को भी एक स्टूडेंट को भी डाउट होगा मुझे बोलो, मैं सॉल्व करूंगा. राइट. ऐसे मत जाना कि 2-3 लोगों का हो गया तो सबका हो जाएगा. हो सकता है डाउट, कोई बड़ी बात नहीं है. 2 + 2 4 की जगह पे अपन 5 भी लिख सकते हैं, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है. द पॉइंट इज कि कुछ भी डाउट आए बिंदास मुझे पूछो, तभी सॉल्व कर पाएंगे हम लोग. 38 38 38 सॉल्व करना है. बाकी लोगों का 38 हुआ. हाँ No. नहीं हुआ 38. ओके ओके ठीक है, करते हैं. A body drop from a height h with initial velocity 0 strikes the ground with velocity 3 meter per second. Another body of same mass drop from the height h with a velocity of 4 meter per second. The final velocity of the second mass with which it will strike the ground is. देखिए सो ये आपका सरफेस है, यहाँ से आपने बॉल को एक ड्रॉप किया है. सो यहाँ से मैंने बॉल को ड्रॉप किया h हाइट से, सिंपली आपने ड्रॉप कर दिया है. तो जब ये ग्राउंड पे आके हिट कर रहा है तो इसका वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी है 3 meter per second. So it is hitting the ground with a velocity of 3 meter per second. Okay. So it is hitting ground with a velocity of. अब इस सेकंड केस में आपने बॉल को फेंका है 4 मीटर पर सेकंड से, सेम हाइट से. अगेन वी आर थ्रोइंग इट फ्रॉम द सेम हाइट. द फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड मास विथ व्हिच इट विल हिट द ग्राउंड. तो ये किस वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा ये आपसे पूछा है. ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस. फर्स्ट केस, सेकंड केस. चलिए फर्स्ट केस को पहले एनालाइज करते हैं. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a से जाते हैं क्योंकि ग्रेविटी जो लग रहा है वो कांस्टेंट है. फाइनल वेलोसिटी आपका है 3 का स्क्वायर. इनिशियली आपका 0 होगा कि आपने जस्ट इसको रिलीज किया है, प्लस 2 इंटू जी इंटू एच. सो 9 विल बी इक्वल टू व्हाट, 2gh. लेट्स हैव दिस एज इक्वेशन नंबर 1. ओके, नाउ विल गो फॉर द सेकंड केस. फिर से रिलेशन लगाएंगे. v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. अगेन अभी आपको v पूछा गया, लेकिन अभी आपने इसको फेंका है विथ 4 का स्क्वायर प्लस 2g into h. Instead of 2gh we can write 9 here from equation number 1. So v square कितना हो जाएगा, 16 plus of 9. So v square is equal to what, 25. So v कितना होगा, root over 25. So v will be equal to what, 5 meters. This is the correct answer. Am I clear? Yes, sir. Good. इसमें क्या था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये. ओके, सो 38 का आंसर होगा ए. चलो 39. Done, sir. Done, sir. Very good. So shall I leave it? 39.
Excellent. 40, 40, 38 का आंसर आई गेस कितना है? हाउ फार अबव द ग्राउंड द सेकंड ड्रॉप? शायद 1.25 आता है। लेट मी सी द आंसर, देखता हूँ। 39 का ए ऑप्शन है, ये मतलब 3.75 मीटर। मयूरेश 38 करूं मैं कि आगे है आपका? आगे आगे। क्वेश्चन नंबर 40, 40। क्वेश्चन नंबर 40, सर डाउट है। a car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it deaccelerates at the constant rate beta and comes to rest. The total time elapsed is t. ये कराया है मैंने शायद क्लास में, हम लोगों ने सेशन में किया इसको। सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कार है, वो रेस्ट से स्टार्ट किया और एक्सीलरेट किया अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक थोड़ी देर तक, and after that it started deaccelerating at the rate of beta meter per second square. ठीक है, सो A to B तक उसने एक्सेलरेट किया है और B to C में उसने डीएक्सेलरेट किया है और बाद में फिर वो जाकर रेस्ट में आ गया। आपको बोला जा रहा है कि टोटल टाइम T लगा है, तो बताइए वेलोसिटी मैक्सिमम कितना होगा? ऑब्वियसली वेलोसिटी मैक्सिमम B पे होगा, क्योंकि एक्सेलरेट करेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, यहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाएगा एंड देन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग बिकॉज रिटार्डेशन लगने लगा इस रेंज में। सो इधर वेलोसिटी इंक्रीज करेगा बिकॉज एक्सेलरेट कर रहा है, इंक्रीज करेगा करेगा करेगा, मैक्सिमम आएगा एंड देन वेलोसिटी विल कीप ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज रिटार्डेशन लग रहा है इस वाले जोन में, तो इधर वेलोसिटी घटने लगेगा, है ना। तो यहाँ पे ही आपका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा एंड लेट मी टेक दिस एज v डैश फॉर सिंपलिसिटी। अगर हम ए बी के लिए बात करें, v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ ए टी। मान लो कि t1 टाइम तक एक्सेलरेट किया इसने और t2 टाइम में डी एक्सेलरेट किया, सो फाइनल वेलोसिटी आपका v डैश हो गया, इनिशियली 0 है प्लस अल्फा इंटू t1, सो v डैश इज इक्वल टू व्हाट? अल्फा इंटू t1। सो t1 कितना हो जाएगा? v डैश बाय अल्फा होगा। सो t1 आई एम हैविंग हियर इज v डैश बाय अल्फा। इन द सेम वे अगर मैं इस bc में चलता हूँ, फिर से लगा दीजिए v इज इक्वल टू यू प्लस ऑफ ए टी। नाउ फाइनली आप रेस्ट में आ रहे हो, सो आपका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा। बीसी इंटरवल के लिए आपका इनिशियल वेलोसिटी v डैश है, एक्सेलरेशन हो गया माइनस बीटा और टाइम लगा है आपको t2, सो v डैश इज इक्वल टू व्हाट? बीटा इनटू t2। दैट इंप्लाइज कि t2 कितना हो जाएगा? v डैश बाय बीटा। विल इट बी t1 एंड t2? ठीक है, सो टोटल टाइम अभी कितना हो जाएगा? सो कैन आई से फ्रॉम हियर दैट t1 प्लस ऑफ t2 इज इक्वल टू t, क्योंकि टोटल टाइम इलेप्स t दिया, तो t1 प्लस t2 किसके बराबर हो जाएगा? t के इक्वल हो गया। सो व्हाट वी कैन से फ्रॉम हियर दैट v डैश बाय अल्फा प्लस v डैश बाय बीटा इज इक्वल टू t। v डैश को कॉमन ले लो, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा इज इक्वल टू व्हाट? t, which implies b dash को कॉमन ले लिया, सो बीटा प्लस अल्फा बाय अल्फा इनटू बीटा, सो व्हाट विल बी v dash फ्रॉम हियर? अल्फा इनटू बीटा इनटू t बाय अल्फा प्लस ऑफ बीटा। खत्म। एम आई क्लियर? ये आपका मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा। Got the calculations properly? Yes. So क्वेश्चन नंबर 40 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 41। Done, sir. ओके गुड। 41 सबका हो गया ना? ओके गुड भूमिका। Done. 42, 42, Done, sir. वेरी Done. गुड। 43, 43,
हुआ है कि करना है 43? करना है। करना है. The body dropped from a tower, top of a tower, falls through 40 meter during the last 2 seconds of its fall. The height of the tower is. So आपने क्या किया, एक बॉडी को ड्रॉप किया है यहां से टावर दिया है आपको. आपने यहाँ से एक बॉडी को ड्रॉप किया इसका मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 होगा. सो मान लीजिए टावर का हाइट h है, ठीक है, h हाइट है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लास्ट 2 सेकंड्स में वो कितना नीचे गिरा है. द हाइट ऑफ द टावर इज, लास्ट 2 सेकंड इट फॉल्स 40 मीटर. आखिरी के 2 सेकंड्स में तो कितना नीचे फॉल किया बेटा, 40 मीटर. इन लास्ट 2 सेकंड्स, ये हो गया ना. सो मान लो जब ये फॉल कर रहा है तो इसका वेलोसिटी आपका v डैश, ठीक है. सो लास्ट 2 सेकंड्स में इसने कितना फॉल किया, 40 मीटर. सो आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट दी टोटल हाइट ऑफ दिस टावर. टावर का टोटल हाइट कितना होगा ये पूछा गया आपसे. कैसे अप्रोच करेंगे इसको, लेट्स फर्स्ट फाइंड आउट दिस v डैश. v डैश पहले निकाल लेते हैं. कैसे, सो ये वाला इंटरवल ले लेता हूं मैं, a b और ये c. सो पहले हम लोग इन bc बात करते हैं. इसका इंफॉर्मेशन दिया है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर. कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 40, और वेलोसिटी क्या है, v डैश इंटू टाइम कितना लगा है उसको, लास्ट 2 सेकंड से, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू व्हाट, 2 का. So what I am having from here, that 40 is equal to 2 v dash plus एक 2 से 2 एलिमिनेट हो गया 20. So twice of v dash 20 के बराबर हो जाएगा, which will give us what, 10. इसका मतलब v dash कितना हो गया बेटा, is it equal to 10 मीटर पर सेकेंड. 10 मीटर पर सेकेंड हुआ. देखो आपने टोटल हाइट कितना पकड़ा था, h, तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, will it be equal to h minus of 40. होएगा. सो टोटल हाइट आई हैव टेकन इज h, लास्ट इतना उसने 40 मीटर चला है, तो ये वाला हाइट कितना हो जाएगा, विल इट बी इक्वल टू h माइनस ऑफ 40 मीटर. Yes, sir. Yes, sir. h माइनस ऑफ 40 मीटर. अब चलो जरा इंटरवल ए बी में, इन ए बी लगाइए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ऑफ व्हाट, 2as. तो फाइनल वेलोसिटी आपका v डैश है, इनिशियली आपको 0 है, रेस्ट से स्टार्ट किया है, प्लस 2 इंटू जी इंटू एच, h माइनस ऑफ व्हाट, 40. सो v डैश ऑलरेडी तुमने कैलकुलेट किया हुआ, दिस इज 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 प्लस 2 इंटू 10 इंटू h माइनस ऑफ 40. दिस विल गेट कैंसल, 5. h माइनस ऑफ 40 इज इक्वल टू व्हाट आई एम हैविंग, 5. सो हाइट कितना हो जाएगा, 45 meters. So this will be the height of tower. Am I clear? Yes, sir. Some at least calculation समझा कैसे किया हम लोगों ने. Yes. चलो ठीक. Shall we move forward? Yes, sir. Okay. So the answer here is 45 meters. 43 done. 44. 44. Done, sir. Okay. Done. 45. 45. हुआ है कि करना है 45?
45 करूं मैं कि हो गया है? करना है। Okay. A car is moving along a straight road with uniform acceleration. It passes through 2 points P and Q, separated by a distance of 30, separated by a distance with 30 km per hour and 40 km per hour respectively. The velocity of car midway between P and Q is. So there is a car here, move कर रहा है, और ये आपका पॉइंट P है और ये आपका पॉइंट Q है. So when the car was at point P, its speed was 30 किलोमीटर पर आवर, और जब कार क्यू पे चला गया तो उसका स्पीड कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर. एंड लेट्स से ये जो डिस्टेंस है दिया नहीं हमें, सो एक्स पकड़ लेता हूँ. x/2 पे जब ये आएगा कार, सो इसका वेलोसिटी क्या होगा ये आपसे पूछा गया है. एंड दे हैव मेंशन्ड हियर कि एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है ना. सो वी आर डीलिंग फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ओके, चलो पहले पी क्यू में बात आर पकड़ लो. सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं पी क्यू में. फॉर पी क्यू क्या लगाओगे आप रिलेशन? v square is equal to u square plus 2as. So final velocity कितना हो गया? 40 का स्क्वायर is equal to what? 30 का स्क्वायर plus 2 into acceleration a into what? x. So this will come this side. 40 का स्क्वायर minus of 30 का स्क्वायर 2 into ax. So a square minus b square का फॉर्मूला लगा देंगे. So 40 plus 30 कितना हो जाएगा? 70 into 10 is equal to 2 into a into x. So ax का वैल्यू कितना हो गया? Is it equal to 350? होगा 350, राइट. अब आप क्या करो, इन पी आर में बात करते हैं इस वाले इंटरवल में. फिर से लगाइए, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस. वी आपको निकालना इनिशियली कितना है? 30 का स्क्वायर x/2. ये 2 से 2 एलिमिनेट हो गया क्योंकि हाफ ही डिस्टेंस चलना है ना. x/2 लेना पड़ेगा. x का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास था 350. सो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 900 प्लस ऑफ 350, 1250, right? So what will be v from here? Under root of 1250 किलोमीटर पर आवर. कितना हो जाएगा रिलेशन सॉल्व करने के बाद? Under root of 1250 will be how much? 25 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? What is the square of 25? 625 ना. 25 into 25, 625, and multiplied by 1250. Yes. So we are getting from here as the velocity. नहीं 35 नहीं होगा बेटा. This is 25 root 2 किलोमीटर पर. सही, 25 root 2 किलोमीटर पर. Am I clear properly? Yes, sir. Good. So we have done with 45 also. Let's go to next 46. Done, sir. Excellent. 46 हो गया ना सभी का? Yes. Okay, good. 47. हो गया sir. Very good. Remaining students 47. Good. भूमिका. बाकी लोगों का 47 हुआ? Yes. Okay. 48. Done, sir. Done. Excellent. Good. सबका क्लियर है 48? Yes. So we have completed this assignment on kinematics. ठीक है.
ये पास्ट ईयर के नीट और मेंस के क्वेश्चन का कलेक्शन था। मैं बाद में और एक शब्द दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में, और साइड बाय साइड इसको आप सॉल्व करते रहो। जो डाउट्स आएगा वो मुझे पूछते रहना। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। सो अगला क्वेश्चन असाइनमेंट था ऑन मोशन इन प्लेन। चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 किया है सॉल्व इसको? हाँ, हैव यू सॉल्व दिस असाइनमेंट मोशन इन No, प्लेन? sir. नहीं किया है। ओके, ठीक है। सो आई विल नॉट डिस्कस इट टुडे। मैं छोड़ता हूँ, पहले आप सॉल्व करके आओ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट वीक में। क्लियर? सो कंप्लीट, डोंट सॉल्व दिस। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सॉल्व नहीं करना 4.11। सोल्व ओनली अप टू 36। ये हम लोग जब पढ़ेंगे उसके बाद सॉल्विंग करेंगे। एम आई क्लियर? Yes, sir. है ना? सो कंप्लीट करो इसको, असाइनमेंट सॉल्व करो नेक्स्ट टाइम के लिए। फ्रॉम हियर टिल दिस क्वेश्चन नंबर 36, डोंट गो फॉर सर्कुलर मोशन। ये भी हमने पढ़ा नहीं है, तो क्लास में हमने सिर्फ बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊंगा व्हेन वी विल डिस्कस फॉर एंट्रेंस लेक्चर, तब इसको सॉल्व करेंगे। अभी मत करना, अभी सिर्फ 36 तक ही ट्राई करो। Wait, I'll share a few questions to solve. Okay, I'm sharing screen. ये करिए क्वेश्चन नंबर 12, गुड क्वेश्चन, एग्जांपल 12। Okay, करें इसको एनालाइज। The velocity of projectile when it is at the highest point is root 2 by 5 times its velocity when it is at half of the greatest height. Determine its angle of projection. So from here we have projected the projectile. ठीक है, सो आपने मान लो प्रोजेक्टाइल को फेंका है विद सम वेलोसिटी, लेट्स से u मीटर पर सेकंड एट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट is
root 2 by 5 times root 2 by 5 times of its velocity, root 2 by 5 times of its velocity at half of maximum height. क्या करें इसमें? तो आपसे पूछा गया फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. Can anyone tell me how to approach this? चलो देखते हैं. मुझे बताइए जब ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगा, सो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी? When the particle will be here at the highest point, इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v डैश पकड़ लेता हूँ. So let's say it is u cos theta और ये इसका वेलोसिटी हो गया u sin theta. Okay. So what will be the velocity at highest point? At highest point इसका वेलोसिटी कितना होगा? Will it be only equal to v dash? क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता नहीं है प्रोजेक्टाइल का, सिर्फ कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. So what will be v dash in this case? Is it only equal to v cos theta? हाँ या ना? Yes, sir. ओके. हाइट कितना है? h क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. चलो हाफ पे जरा देखते हैं. सो लेट्स से इधर का वेलोसिटी समथिंग v, इसका वर्टिकल वेलोसिटी देखना पड़ेगा और हॉरिजॉन्टल. तो हॉरिजॉन्टल तो वही रह जाएगा और वर्टिकल वेलोसिटी विल चेंज ऑफ कोर्स बिकॉज ग्रेविटी नीचे लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो वी वाई चेंज कर जाएगा. So at half of maximum height, half of maximum height. चलो वर्टिकल डायरेक्शन में सोचते हैं, क्या मिलेगा आपको? v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस ओवर 2s. सो वी वाई का स्क्वायर इनिशियली कितना हो गया बेटा? u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2g इंटू h बाई 2. ए होगा ना? सो व्हाट विल बी वी वाई का स्क्वायर? वी वाई का स्क्वायर विल बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g इंटू h. h कितना है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई व्हाट? 2g. ये है ना h? h की जगह पे रख दिया मैंने u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई व्हाट? 2g. So instead of h I have placed this value here. अभी क्या आएगा देखो, this 2 and 2 will be eliminated. ये g से g एलिमिनेट हो जाएगा. So velocity along y का स्क्वायर कितना होगा? Will it be equal to u स्क्वायर, अच्छे से लॉजिक लगा के सॉल्व करेंगे इसको, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई व्हाट? ट्वाइस. सो वेलोसिटी अलोंग y का स्क्वायर कितना हो जाएगा? इज इट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2? करेक्ट. सो व्हाट विल बी वेलोसिटी अलोंग y? इज इट u साइन थीटा बाई रूट 2, है ना? सो ये तो आपने क्या निकाला इस बार पर्टिकुलर पॉइंट पे y का वेलोसिटी यहाँ पे. so यहाँ पे नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा? v डबल डैश. so what will be v double dash? will it be equal to vy का स्क्वायर प्लस u cos थीटा का होल स्क्वायर? क्योंकि हॉरिजॉन्टली u cos थीटा था, यहाँ पे vy था, तो नेट वेलोसिटी ये होगा ना v डबल डैश. हाँ या ना? yes, sir. Okay.
So what will be v double dash in this case? Under root of vy, which I am having here, u square sine square theta by 2 plus u square cos square theta. Correct? So v double dash u square ठीक है. अब जरा रिलेशन पे चलते हैं. क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि the velocity at highest point is root 2 by 5 times its velocity at the maximum height. So can I say from here, from question, that v dash is equal to root 2 by 5 of v double dash, क्योंकि velocity at highest point को मैंने v dash पकड़ा था, highest point का velocity was my v dash, so v dash is equal to root 2 by 5 times of v double dash, है ना. So u cos theta is root 2 by 5 under root of u square sine square theta plus 2 into what? U square cos square theta by 2. बरोबर है क्या पॉइंट यहाँ तक बेटा सबको? अभी क्या करोगे आप? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कितना आ जाएगा? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 2 by 5 into u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा plus 2u स्क्वायर cos square theta by 2. So this 2 and 2 will be eliminated. ये u स्क्वायर से u स्क्वायर सारा कैंसिल हो जाएगा. 5 इधर लेकर जाओ. So 5 cos square theta is equal to sin square theta plus twice of cos square theta. इसको इधर लेकर जाइए. 3 cos square theta will be equal to what? Sin square theta. So which means tan square theta, इसको नीचे लेकर जाओ. Sin square theta by cos square theta will give us what? Tan square theta. किसके बराबर हो गए? 3. So what will be tan theta from here? Is it equal to root 3? So ये प्लस माइनस रूट 3 होगा. ठीक है. tan थीटा का रूट 3 है तो थीटा कितना है बेटा? What is the value of pi theta? by 3. Pi by 3 और 60 degree. Anything else? यही तो था क्वेश्चन. It can also be written as pi. Yeah, it can be written as pi by 3 also, or if you want to write in degrees, it can be written as 60 degree. रेडियन में लिखोगे तो pi by 3. Am I clear? Yes, sir. कैलकुलेशन जम गया ढंग से? क्लियर है सबको? Is it fine everyone? Yes, sir. चलो, we'll do one more question. एक दो और करते हैं. Time है हमारे पास. Example number 11. Go for it.
Okay. A particle is thrown over a triangle from one end of the horizontal base, and after grazing the vertex falls on the other end of the base. If alpha and beta the base angles and theta is the angle of projection, prove that tan theta is equal to tan alpha plus of tan beta. Let's work on this. पहले तो diagram समझते हैं. Let's say we have a triangle here. ऐसा हमारा कोई triangle हो गया. Now here the angle formed is alpha, and at this end the angle formed is beta. So आपने एक projectile को यहाँ से फेंका like this. So ये projectile ऐसे जाएगा, and after grazing this height, so इतना height जाने के बाद projectile ऐसे आके लैंड कर गया. प्रोजेक्टाइल मान लो यहाँ पे आके बेस पे लैंड कर गया. और ये एंगल दे हैव सेड हियर इज व्हाट बीटा, और ये आपका एंगल था इंक्लिनेशन जिससे आपने फेंका इज थीटा. सो आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट tan of theta is equal to tan alpha plus tan beta. tan theta कितना हो जाएगा, tan alpha plus of tan beta के बराबर हो. ये प्रूव करना है ना. Yes, sir. Let's work on this. कैसे करें इसको. मान लो ये वर्टिकल हाइट आपका y है, और अगर मैं ये डिस्टेंस पे x पकड़ लेता हूँ, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r माइनस ऑफ x होगा क्या. r stands for what, range. Yes or no? So what is tan alpha from here? tan alpha कितना हो जाएगा, is it simply equal to y by x? tan alpha क्या हो जाएगा, perpendicular by base. So can we say tan alpha is y by x? Now what is tan beta here? Y by r minus of x. होगा. So tan alpha is simply equal to y by x, perpendicular by base, and tan beta is y by r minus of x. So add them. What will be the value of tan alpha plus of tan beta? Is it y by x plus y by r minus of x? ठीक है, ये आएगा ना. सो अगर हम सॉल्व करें इसको, सो क्या रिजल्ट आ रहा है आपको, tan अल्फा y को कॉमन ले ले, सो 1 by x प्लस 1 by r minus of x. tan अल्फा प्लस tan बीटा कितना हो जाएगा, y r minus of x plus x by x into r minus of x. So what is tan alpha from here? Is it y into r by x into r minus of x? ये आएगा ना बेटा tan alpha Yes, sir. plus tan beta. Now याद है हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल किया था. लेट्स हैव दिस एज इक्वेशन नंबर 1. नाउ फ्रॉम इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, from equation of projectile, क्या रिलेशन था प्रोजेक्टाइल के इक्वेशन से, y is equal to x tan theta into 1 minus of x by r. So y is equal to what, x tan theta, this will be r minus of x by r. yeah, LCM ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, y is equal to x tan theta 1 minus x by r. So this will be like this. इसको अगर हम सॉल्व कर दे, so y into r x into
r minus of x tan theta. So y into r by कितना हो जाएगा x into r minus of x. Will that be equal to tan theta? This is my equation number 1. Sorry, equation number 2. होगा ऐसा? Now, by comparing equation 1 and 2, देखो कितना अच्छा सवाल है. So good question. जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा सवाल नहीं बन हिलेगा. ये प्रॉपर जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है. By comparing equation 1 and equation number 2, क्या इसका राइट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड आर दे सेम? देखो ना, इस फर्स्ट इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड है और सेकंड इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है, क्या ये दोनों सेम है? y into r by x. Yes, sir. Can we compare the remaining thing? So tan alpha, और ये रिजल्ट बहुत बार एडवांस के न्यूमेरिकल में भी यूज हुआ है, ये वाला रिजल्ट. So what I'm having from here, tan alpha plus tan of beta is equal to what? Tan of theta. Good. Is it fine? Yes, sir. Any doubt in this? Any doubt in this? No, sir. एक क्वेश्चन और करते हैं लास्ट, देन विल क्लोज. ये वाला करिए जरा. एग्जांपल 10 अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है मुझे. एग्जांपल 10 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट निकाल दो. ओनली फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी. चलिए पढ़ता हूं मैं. क्या कर रहा है क्वेश्चन में ये देख. सो ग्राउंड आपने फायर किया है यहाँ से प्रोजेक्टाइल को. विल ओनली कैलकुलेट इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि वो मिल जाएगा तो बाकी सब मिल जाएगा. यू मीटर पर सेकंड से एंगल थीटा से. सो प्रोजेक्टाइल ऐसे फायर हुआ, यहाँ पे आके प्रोजेक्टाइल लैंड कर गया. सो सिंप्लिसिटी के लिए उसने क्या बोला, दिस दे हैव टेकन एज एक्स एक्सिस और ये वाला उसने वाई एक्सिस लिया है. यहाँ का वेलोसिटी दिया है पॉइंट पी का. लेट्स से पॉइंट पी का वेलोसिटी कितना दिया? 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप. वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी कितना है? 30 आई कैप प्लस ऑफ 40 जे कैप मीटर पर सेकेंड. और ये जो हाइट है ना, दिस दे हैव ऑलरेडी गिवन 45 मीटर. ओके. सो इधर की तरफ वेलोसिटी 30 है और इधर की तरफ वेलोसिटी कितना है वाई एक्सिस में? 40 मीटर पर सेकेंड. सो ऑफ कोर्स अगर ये 30 है तो इधर भी क्या होगा? 30 मीटर पर सेकेंड. ये वाला जरा कैलकुलेट करते हैं v डैश. सो कैसे देखोगे आप? इन वर्टिकल डायरेक्शन, in vertical direction, what we can say? In vertical direction क्या बोल सकते हैं हम लोग? Can we apply kinematic equations in vertical direction? Yes, sir. Yes, sir. V square is equal to what? U square plus of 2as.
सो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास था 40 का स्क्वायर। इनिशियली तो आपने वी डैश पकड़ा है वर्टिकल में, माइनस एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है 10 और डिस्प्लेसमेंट ऊपर विच इज 45। सो दिस इज 40 का स्क्वायर 1600 इज इक्वल टू वी डैश का स्क्वायर 45 into 90, so this is minus of 900. 45 into 2 90 होगा, 90 into 10 is 900. So V dash का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 plus 900. So V dash का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500. So what will be V dash? Will that be equal to 50 meter per second? होगा ये V dash 50 meter per second? करेक्ट। सो इसका वेलोसिटी कितना आएगा, व्हाट विल बी दिस? अगर आप u निकालोगे सो u क्या होगा अंडर रूट ऑफ v डैश का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं ना रिजल्ट को, रिजल्टेंट वेलोसिटी तो आपका u है अंडर रूट ऑफ v डैश का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। सो व्हाट विल बी u अंडर रूट ऑफ 50 का स्क्वायर प्लस, सो u कितना हो जाएगा 2500 प्लस 900। सो 10 रूट ऑफ 34, ये आएगा ना आंसर। This will be your initial velocity of projection. Am I clear, everyone? Yes. एंगल कैसे निकालोगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ये कैसे निकालेंगे? So what we can say, can we write tan theta here is equal to v by vx? ये आपका vy है, so tan theta is equal to perpendicular by base, so tan theta will be equal to v by vx. So what will be tan theta from here? 50 by 30. So tan theta कितना हो जाएगा, is it equal to 5 by 3? So what will be theta? Tan inverse of 5 by 3. Am I clear? So ये आपका क्या दे देगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। So this you got angle of projection, ये आपका initial velocity of projection, बाकी सब आप निकाल सकते हैं, ये मिल। Am I clear properly? Yes, sir. चलो ठीक है। So we'll close for today. Next week में आपको homework है, complete that projectile वाला assignment. और next week में we'll start with Newton's law, one of the very important topic for mechanics. तो अगले week start करेंगे उसको। Clear? Okay, sir. चलो समझा ना आज के लेक्चर ढंग से? Yes. Yes. चलो ठीक।